बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ Remember, when your Lord said to the angels, I am going to create a deputy on the earth, they said, will you create there one who will spread disorder on the earth and cause bloodshed, while we proclaim your purity along with your praise and sanctify your name? He said, certainly, I know what you know not. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ And he taught Adam the names, all of them, then presented them before the angels and said, tell me their names if you are right. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ They said, to you belongs all purity. We have no knowledge except what you have given us. Surely, you alone are the all-knowing, all-wise. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تم ان کو
उन चीज़ों के नाम बता दो। चुनांचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। He said, O Adam, tell them the names of all these. When he told them their names, Allah said, Did I not tell you that I know the secrets of the skies and of the earth, and that I know what you disclose and what you conceal? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। And when we said to the angels, Prostrate yourselves before Adam, so they prostrated themselves, all but Iblis, Satan. He refused, showed arrogance, and became one of the infidels. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ और हमने कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होंगे। And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat at pleasure wherever you like, but do not go near this tree, otherwise you will be counted among the transgressors. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश व आराम में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा, और हमने आदम, इनकी बीवी और इबलीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। Then Satan caused them to slip from it and brought them out of where they had been. And we said, Go down, all of you, some of you the enemies of others, and on the earth there will be for you a dwelling place and enjoyment for a time. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा की, कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है।
Then Adam learned certain words to pray with from his Lord. So Allah accepted his repentance. No doubt He is the most relenting, the very merciful. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. हमने कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे इनको ना कोई खौफ होगा ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे. We said, "Go down from here, all of you. Then, should some guidance come to you from me, those who follow my guidance shall have no fear, nor shall they grieve. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. और जो लोग कुफर का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले लोग हैं जहां वो हमेशा रहेंगे. As for those who disbelieve and deny our signs, they are the people of the fire. They shall dwell in it forever. صدق الله العظيم.